नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, संसद के स्पेशल सेशन की बनी रणनीति। राजस्थान में सड़क हादसे में भावनगर के 12 लोगों की मौत, 4 धाम की यात्रा पर निकले थे श्रद्धालु। और वडोदरा के 3 हॉस्पिटल्स कॉरपोरेशन ने किए सील, कॉरपोरेशन के नियमों का पालन नहीं होने से की गई कार्यवाही। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के संगठन ने एक के बाद एक बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में आज बुधवार 13 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई। ये बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, शिवसेना नेता संजय राउत और राघव चड्ढा सहित कमेटी के 14 में से 12 मेंबर्स मौजूद रहे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी मौके पर नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है। मीटिंग का एजेंडा संसद के विशेष सत्र में विपक्षी गठबंधन के लिए रणनीति बना रहा। आईएनडीआईए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने हिंदू विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये सीट शेयरिंग की बैठक नहीं है, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को खत्म करना है। उन्होंने हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया, कोरोना और एड्स कहा था। वे हिंदू धर्म की तुलना ऐसी बीमारियों से करते हैं, ये हमारे समाज के लिए खतरा है। जवाब में संजय राउत ने कहा कि इस देश में कोई भी हिंदू विरोधी नहीं है। इस देश में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। गुजरात के भावनगर से 4 धाम की यात्रा पर गई बस राजस्थान में दुर्घटना का शिकार बनी है, जिसमें भावनगर के 11 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। गुजरात के भावनगर से कार्तिक ट्रेवल्स की बस 4 धाम की यात्रा पर रवाना हुई थी, जिसमें करीब 48 जितने श्रद्धालु थे। राजस्थान के भरतपुर निकट ये बस खराब हो गई थी, जिसका रिपेयरिंग वर्क चल रहा था। इस दौरान पीछे से आई बेलगाम ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ये बस बीती रात 9 बजे पुष्कर से गोकुल मथुरा की ओर रवाना हुई थी। हादसे की खबर पाते ही दिहोर के सरपंच प्रवीण मकवाना और मृतक के परिजन राजस्थान जाने के लिए रवाना हुए हैं। राजस्थान हमारा गाम में एक अकस्मात बन्यो छे, એટલે અમે રાજસ્થાન જવા નીકળ્યા છીએ। અમને 2 કલાક પહેલા સમાચાર મળ્યા અને અમે અત્યારે 5 જણા ગામના આગેવાનો બધા ત્યાં જઈએ છીએ। ટોટલ 48 જણા પ્રવાસે નીકળેલા, હરિદ્વાર જવા નીકળ્યા હતા અને અત્યારે 11 જણાની હાલત ખરાબ છે એવા સમાચાર સાંભળ્યા છે ને અમે ફટાફટ ત્યાં જઈએ છીએ। 9 તારીખે નીકળી હતી ગાડી, કાર્તિક ટ્રાવેલ્સની ગાડી હતી અને આ ગાડીને કંઈ રસ્તામાં ફોલ્ટ હતો ને ડીઝલની પાઇપ તૂટીને એના હિસાબે અકસ્માત બની। इस मामले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहानुभूति जताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। इस हादसे में 6 महिलाएं और 5 पुरुषों की मौत हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के पास मामले की कोई ठोस जानकारी नहीं है। तारीख 9 ना रोज बजरंगदास बापा आश्रम सेवक समुदाय दिहोर तालुको तळाजा खातेथी बस रवाना थયેલ મથુરા ખાતે। એમાં ભરતપુર નજીક વહેલી સવારે અકસ્માત થયેલ છે બસમાં અને યાત્રાળુઓ 57 સવાર હતા, જે પૈકી 11ના અકસ્માતે અવસાન થયેલ હોવાનું પ્રાથમિક સમાચાર મળી રહ્યા છે। મોટાભાગના જે મૃતકો છે એ દિહોર ગામના હોવાનું પ્રાથમિક માહિતી મળે છે। સ્થાનિક પ્રશાસન સાથે થયેલ ચર્ચા અનુસાર ત્યાં હાલ પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી શરૂ છે। પોસ્ટમોર્ટમ પૂર્ણ થયા બાદ ત્યાંથી એમ્બ્યુલન્સ રવાના થશે। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा पार्किंग नहीं होने से और पास किए नक्शे में गड़बड़ी किए जाने से 3 अस्पतालों को सील किया गया है। वडोदरा में चलने वाली सैकड़ों अस्पतालों में नियमों का पालन नहीं होता है, जिस पर अक्सर कार्यवाही की जाती है। ऐसी ही कार्यवाही वडोदरा के 3 हॉस्पिटल्स पर की गई है, जिसमें गोत्री की ईशान्य हॉस्पिटल, कारेलीबाग की तीर्थ हॉस्पिटल और पानी गेट की मुस्लिम हॉस्पिटल शामिल है। इन अस्पतालों के पास उचित पार्किंग व्यवस्था नहीं है और अस्पताल का नक्शा पास करते वक्त दिखाई गई व्यवस्था को बदल दिया गया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए अस्पतालों को सील लगा दिया गया है। वडोदरा के कई हॉस्पिटल्स में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वे अस्पताल रहम नजर के तले चलते रहते हैं। अगर इन अस्पतालों पर ठोस जांच चलाई जाए तो कई अस्पतालों में गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। गुजरात के वडोदरा में जिला पंचायत के नए पदाधिकारी के चयन की कवायद के तहत
भाजपा द्वारा नामों का ऐलान किया गया है। गुजरात में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में इन दिनों नए पदाधिकारियों का चयन जारी है। इसी के तहत वडोदरा जिला पंचायत में भी नए पदाधिकारियों के चयन की कवायद की गई। वडोदरा भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल और प्रभारी राजेश पाठक द्वारा भाजपा की ओर से नामों का ऐलान किया गया, जिसमें गायत्री बा महिड़ा को अध्यक्ष, अश्विन पटेल को उपाध्यक्ष, नीलेश पुराणी को कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, रेशमा वसावा को शासक पक्ष के नेता और नवीन सोलंकी को दंडक के पद के चयनित किया गया है। તમામે તમામ 27 સભ્યો ભેગા મળીને વડોદરા જિલ્લાનો વિકાસ કેવી રીતે થાય, ગરીબોનો કેવી રીતે તમામ સરકારના લાભો મળે, એ બધા જ લાભો ગરીબોને આપવા માટે તમામે તમામ સભ્યો સાથે મળીને આ જિલ્લા પંચાયતમાં કામ કરવાના છે। બધા જ ભેગા થઈને આખા જિલ્લાનો વિકાસ થાય એ પ્રમાણે કામ કરશે, એ પર મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत कार्यालय में फॉर्म भी भरा है, जिस पर डीडीओ ममता हिरापरा ने जानकारी दी। कल आयोजित होने वाली सामान्य सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। जे पण कार्य आवशे एने हूँ प्रगतिना पंथ पर लई जવાનો प्रयत्न करीश। शिक्षण छे, आरोग्य छे, अत्यारे महिला अने बाळ विकासना कार्यो छे अने जे पण नवी योजनाओ आवशे दरेकने हूँ आगळ वधावવાનો प्रयत्न करीश। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया गया है, जिस पर उन्होंने भाजपा का आभार जताया। हमारी जो सरकार श्री की योजनाओं है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जब से कार्यकाल संभाला तब से अंत्योदय का मार्ग पे चल रहा है। अंत्योदय का मार्ग यानी कि हर एक गरीब वर्ग है, आदिवासी है, दलित है, खेडूत वर्ग है, छूटा छवाए लोग हैं, उनका उत्थान करना, सामाजिक और आर्थिक दोनों के लिए जो योजनाओं बनाई है 450 उपरांत 4,500 योजनाओं बनाई है, वो सभी योजनाओं को हमें अमल करना है। प्रमुखश्री माटे दावेदारीमां गायत्रीबेन मूळराजश्री महिड़ा અને ઉપપ્રમુખશ્રી માટે દાવેદારીમાં અશ્વિન કુમાર ચિતાભાઈ પટેલ 2 વાગ્યા સુધી ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે। ચૂંટણી પ્રક્રિયા 12 વાગે થશે। गुजरात के वडोदरा में तरसाली सुजैन रोड पर अमित पार्क शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की जा रही है। तरसाली सुजैन रोड पर अमित पार्क शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों द्वारा मुख्य सड़क पर ही पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत के आधार पर कॉर्पोरेशन की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया था, लेकिन यहाँ फिर से अतिक्रमण कर दिए गए हैं, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता ने आपत्ति जताई। સુસેન 4 રસ્તાની પાસે આવેલ સુસેન તરસાલી રિંગ રોડ પર આવેલ અમિત પાર્ક શોપિંગ સેન્ટરમાં 18/7/2023 રોજ મ્યુનિસિપાલિટીવાળા આવીને ગાડી લઈને આવ્યા હતા અને જેસીબી તોડી નાખેલી દુકાનની આગળ 20 મીટરનો રોડ 6 મીટરનો જે રોડ છે એ ફરીથી આ લોકો બાંધકામ ચાલુ કરી દીધેલ છે। આ લોકોને કેટલી સમજાવટ કરી, મેં ભાઈ જેને અરજી બી આલી મ્યુનિસિપાલિટીમાં, પણ મિલીભગતથી આ લોકો બાંધકામ કરી રહ્યા છે અને સોસાયટીમાં ઉપરના બધા ફ્લેટોવાળા છે એ બધાને હેરાનગતિ થઈ રહી છે, દુકાનો આજુબાજુવાળાને। નેટિવ પીરિયડ પૂરો થઈ ગયો વર્ષ છતાં પણ આ લોકો હવે તોડી આવીને અને પછી પાછા બાંધકામ પાછું કરી રહ્યા છે અને કે થાય તે કરી લો તમારાથી, અમે તો નહીં હટાઈ, આમ છે તેમ છે, બધું એવું કરી રહ્યા, દાદાગીરી કરી રહ્યા છે। અગાઉ રજૂઆત કરેલી છે અમે પાછી કમિશનર સાહેબને ફોટો બી મોકલેલા છે, અંદર ટાઉન પ્લાનિંગમાં ફોટો મોકલેલા છે, દબાણ શાખા ફોટો મોકલેલા છે, છતાં પણ કોઈ સુનવાઈ છે નહીં અમારી। અમારી માંગ એવી છે, આ 6 મીટર રોડ પર બાંધકામ જવાનું હતું, બાંધકામ કરી એ આ લોકો કાઢી નાખે અને ત્યાં આગળ રોડ બનાવી દે, બસ એટલી માંગ છે દુકાનવાળા જોડે। બધા દુકાનો ભેગા મળીને ઉપર મારી પણ ત્યાં ઓફિસ આવેલ છે, હું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવા તૈયાર છું, છતાં બી આ લોકો સાંભળતા નથી। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत यानी जायकों का देश, हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है। ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफ होटल वडोदरा में 17 सितंबर तक एफ होटल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका। एफ होटल वडोदरा, સયાજીગંજ, વડોદરા। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે।
ઓછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના EMI. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. WhatsApp નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. भारत यानी जायकों का देश. हर प्रांत का अलग अलग जायका, और अगर बात स्ट्रीट फूड की हो तो कहना ही क्या, क्योंकि हम कुछ भी खा लें, कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में खा ले, रेस्टोरेंट में खा ले, मगर स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही है. ऐसे ही कुछ खास स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एफ होटल वडोदरा में 17 सितंबर तक. एफ होटल वडोदरा में लीजिए इंडिया के स्ट्रीट फूड का जायका. एफ होटल वडोदरा, सयाजीगंज, वडोदरा. अहमदाबाद में घटी इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना के बाद सुरक्षा के भागरूप वडोदरा के ओवर ब्रिज पर भी सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा रहे हैं. अहमदाबाद की इस्कॉन ब्रिज दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई थी. ऐसे हादसे वडोदरा में ना हो, इस आशय के साथ महानगर पालिका द्वारा वडोदरा के सभी ब्रिज पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. राज्य के सबसे लंबे अटल ब्रिज पर भी 6 जगहों पर 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. वहीं वाहनों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिस पर नवनिर्वाचित मेयर પિંકી સોનીને જાણકારી દી. જેવી રીતે આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ બ્રિજ છે તો એની ઉપર જ્યારે કોઈ પણ અકસ્માત થાય છે અથવા આપણા શહેરીજનો સાથે કોઈ પણ પ્રકારની મિસબિહેવિયર થાય તેવા કોઈ પણ સંજોગોમાં જેને પણ આવી રીતનું નુકસાન કર્યું છે એની સામે આપણે યોગ્ય પગલાં લઈ અને કંઈક ડિસિઝન લઈ શકીએ એના માટે દરેકે દરેક બ્રિજ ઉપર આપણે કેમેરા લગાવવાનું આયોજન હાથ ધર્યું છે. જેમાં અટલ બ્રિજ પર 8 કેમેરા, ભીમનાથ બ્રિજ ઉપર 3 કેમેરા, મંગલ પાંડે બ્રિજ ઉપર 2 કેમેરા, કાલાઘોડા બ્રિજ પર 3 કેમેરા, લાલબાગ બ્રિજ ઉપર 2 કેમેરા અને પ્રતાપનગર બ્રિજ પર 1 કેમેરો અને અન્ય પણ જ્યાં ધ્યાનમાં આવશે અને માહિતી મળશે તો એની પર પણ સમજી વિચારી અને કેમેરા લગાવવા વિષયમાં ચર્ચા વિચારણા કરી અને નિર્ણય લેવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा के भायली में नागरिकों को प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन यहाँ बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए ड्रेनेज की कार्यवाही कराने पर
स्थानीय निवासियों ने रोष जताया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वडोदरा में कॉरपोरेशन कई विकास कार्यों को अंजाम दे रही है, लेकिन 3 साल पहले पालिका में शामिल किए गए 7 गांव विकास से कोसों दूर है। यहाँ के नागरिकों को प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव है, लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर बिल्डरों के हित में ड्रेनेज लाइन डलवाई जा रही है, जिसका स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। समस्या पाણીની સાહેબ છે। અમારે આટલું વરસ થઈ ગયું, અમે ઘરવેરા નરવેરા બંગલા કામ કરીને ભરીએ છીએ, પણ અમને કોઈ સુવિધા નથી। અમારે વિકાસ કોઈ જ નથી। તમે આવીને જોઈ જાઓ ખાલી એક વખત, પછી અમને કહેજો કે ના તમે એ કરો છો। અમારે સોસાયટીનું ગંદુ પાણી અમારા ઘર પાસે રહીને જાય છે, મચ્છરનો ત્રાસ છે, અમને બહાર બેસાતું નથી, બીમાર ઘરે ઘર બીમારી, અમારે કોણ એ કરશે? અમારે બંગલા કામ કરીને ખાવાનું સાહેબ, અમારો કોણ એ કરશે? જિમ્મેદારી અમારી કોણ લેશે સાહેબ? એટલું તો અમારું શીખાડ। અમે હપ્તા બંગલા કામ કરીને બી અમે હપ્તા ભરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, પછી અમે શું કરીએ? એનાથી આગળ શું કરી શકીએ? અમારી કોઈ કામ ભરવા તૈયાર નથી। અમારે સરદારનગરમાં કોઈ જ વિકાસ નથી। અને જો હાલત જુઓ સરદારનગરની, તમે આ સોસાયટીઓનું પાણી જાય છે, તેમને સુવિધા આલે છે। અમારે સરદારનગરમાં કોઈ સુવિધા નથી। આજકાલ સોસાયટીઓ બની એમને ફૂલ સુવિધા છે, તો સાહેબ અમારો કયો ગુનો છે? આ ભાયલી ગામનો વોર્ડ નંબર 10નો વિસ્તાર છે અને ભાયલી સહિત 7 ગામોને કોર્પોરેશને 3 વર્ષને આજે 3જો મહિનો રનિંગ થઈ ગયો, કોઈ સુવિધા આપી નથી। પણ આજકાલ 2-5 વર્ષથી બનતી આજુબાજુના વિસ્તારમાં જે હાઈફાઈ સોસાયટીઓ બને છે એને કોર્પોરેશન દ્વારા ગટર લાઇનની સુવિધા આપવા માટે અહીંયા જેસીબી દ્વારા શુભ શરૂઆત કરી છે। પહેલાં જીપ આવે છે, પછી દાંત આવે છે, તો પહેલાં ગામના લોકોને સુવિધા આપો, પછી સોસાયટીઓને આપો। એ અમારી નમ્ર વિનંતી છે કોર્પોરેશનને। અને જો તમે આવી રીતે આ ખોટું કામ કરશો તો ના છૂટકે મારે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે મહા આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે। હા, મેં મારે એન્જિનિયર રબારીભાઈ સાથે વાતચીત થઈ, એમણે કીધું કે ભાઈ ગ્રાન્ટ આવે એટલે કરીશું। તો ગ્રાન્ટ પહેલાં ભાયલી ગામના આજુબાજુના વિસ્તારની મૂકવાની હતી, નહીં કે સોસાયટીઓની મૂકવાની હતી। એટલે જવાબો પણ એમના અણધર જ હોય છે અને ખોટા જ હોય છે અને લોકોને ના ગમે એવા જ હોય છે। गुजरात के वडोदरा में अक्षय पात्र के कर्मचारियों ने अपनी वेतन बढ़ोतरी समेत की मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। वडोदरा में अक्षय पात्र संस्था में काम करने वाले कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी और समय पर वेतन दिए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर उतर गए हैं। करीबन 150 जितने कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए मामले पर विरोध प्रदर्शित कर जब तक वेतन बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक नौकरी शुरू नहीं करने की बात कही है। 1.5 साल से अक्षय पात्र कंपनी में जॉब कर रही हूँ, लेकिन 1.5 साल से 1 महीने में ऐसा नहीं हुआ कि हमारा टाइम से पगार हुआ हो। 13 या 14 तारीख तो हमारा पगार होता है। हमारी मेहनत का पैसा ही हमें भीख मांगनी पड़ती है हर महीने। तो हमारे बच्चों का खर्च हम कैसे चलाएं? हमें घर चलाना पड़ता है, बच्चों को फी भरनी पड़ती है, और ये हमें कभी भी टाइम से पगार नहीं हुआ हमारा अब तक। अरे हम हर महीने हमारे सुपरवाइजर को बताते हैं कि हमारी सैलरी नहीं हुए, तो वो हमें एक ही जवाब देता है, हो जाएंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी हम बताते हैं, लेकिन वो भी ऐसा ही जवाब देते हैं कि हो जाएगी। जे रीते मोंघवारी वधे મને પગાર મને મળતો નથી અને મારે ઘર ચલાવવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે। અમારી માંગે પૂરી નહીં થાય તો અમે ભૂખ પર હડતાળ પર બેસવાના છે। 2 महीने की जगह हर महीने बिजली का बिल देने की मांग ऑल गुजरात इलेक्ट्रिसिटी यूजर संगठन द्वारा वडोदरा में की गई है। गुजरात में विद्युत विभाग द्वारा हर 2 महीने में बिजली का बिल दिया जाता है। इस मुद्दे वडोदरा में गुजरात इलेक्ट्रिसिटी यूजर संगठन द्वारा अंबेडकर सर्कल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में बैनर्स पोस्टर्स के साथ 2 महीने की जगह हर महीने बिजली का बिल देने की मांग की गई और साथ ही अडानी ग्रुप के 3900 करोड़ रुपयों की रिकवरी की मांग भी इस मौके पर उठाई गई। अडानी ने जो 2018 से 2023 में जो स्पॉन्सर अप्लाई किया था उसका ओवर बिलिंग करते हुए जो एक्सचेकर में 3900 करोड़ रुपए एक्सेस दिया गया था, GUNL ने भी काफ़ी टाइम से उनसे मांग की है। तो हम ये करने के आए उसको करेक्ट स्टेप लें और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि ऐसा एक उदाहरण बने कि आगे से लोग जो एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन ना करें, और जो भी कंपनी जो उल्लंघन करती है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो गैस
से आधारित उत्पादन करते हैं। वो भी 5 कंपनियां जो हैं आज की तारीख में प्रोडक्शन नहीं कर रही, लेकिन फिर भी GUVNL को PPA के एग्रीमेंट के मुताबिक जो फिक्स कॉस्ट है वो देनी पड़ती है। तो ये ग्राहकों के ऊपर ना जाए, ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। ये जो हमारी मांग है ये सभी लोग जानते हैं कि ये जो बोर्ड है, जो कंपनी है, उन्होंने ही अदानी को लिखा है 3,900 करोड़ रुपया जो गलत तरीके से ले लिया है तो वो वापस करे। ये हमारे निगम ने लिखा है और वो अभी तक वापस नहीं कर रहे। तो ये जो बोझ है ये आम जनता पर ये बोझ जा रहा है। 3,900 करोड़ रुपया के पहले वसूलात करे और उसके साथ साथ जो है कि ये प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन जो बिजली का करने जा रहे हैं वो भी ना करे। और हमारी और भी एक डिमांड है कि पर मंथ दिया जाए। ये महंगाई के ज़माने में 2-2 महीने में एक साथ जो बिल आता है, और उसका दूसरा भी एक लॉस है लोगों के लिए। जो फर्स्ट 50 यूनिट जो फ्री आता है या लेस कम पैसे में आता है, वो 2 महीने का आप यूनिट गिनिए तो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी लूट चल रही है। तो ये लूट ना चले। लोगों के लिए गवर्नमेंट होती है, लोगों के घर में अंधेरा हो जाएगा। जिस तरह महंगी बिजली हो रही है, आज बिजली के साथ ही सब कुछ चल रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हमको डर है। तो ये हम आज आए हैं, यहाँ मेमोरेंडम देंगे और उनको बोलेंगे जो आपके हिसाब से आपने 3,900 रुपया लेने का बोला है तो जल्दी से जल्दी आप वापस लीजिए, और लोगों को जो है गलत तरीके से जो लूट रही है कंपनी, इसके साथ डीलिंग बंद कर दिया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की विजिट पर आए। इस दौरान छात्रों ने उनका स्वागत किया। ABVP के राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा के आगमन पर ABVP के छात्रों द्वारा स्वागत और कैंपस लीडर्स मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान सर सयाजी राव की प्रतिमा पर होशियार सिंह मीणा ने पुष्पांजलि अर्पित की। MS यूनिवर्सिटी के ABVP के सदस्यों से होशियार सिंह मीणा ने मुलाकात की। होशियार सिंह मीणा ने साइंस फैकल्टी के डीन के साथ भी शुभेच्छा भेंट की। इस मौके पर उनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुजरात मंत्री युक्ति प्रदीप और वडोदरा अध्यक्ष ध्रुव पारेख भी मौजूद रहे। बिल्कुल, आज यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकें हैं। 2 दिन के प्रवास पर हम यहाँ हैं और यहाँ के छात्रों की समस्याओं को लेकर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे छात्रों की समस्याएं आ रही है, उनको लेकर आज यहाँ बैठक तय की गई है। इन्हीं बैठकों को लेकर चर्चा की जाएगी। छात्र नेता प्रवास पूरे भारत में चल रहा है, जिस निमित्त राष्ट्रीय मंत्री होशियार जी का MSU में प्रवास रहा है और उस प्रवास के दौरान विद्यार्थियों के साथ मिलना और उसके साथ आनंदमय सार्थक छात्र जीवन, इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है। ABVP छात्र संघ के पक्ष में है और ABVP हमेशा छात्र संघ लड़ने के पक्ष में ही रही है। गुजरात के वडोदरा में घर में लगी अचानक आग से घर में रह रहा परिवार फंस गया, जिसे फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत से बचाया। वडोदरा के आजवा रोड पर बहार कॉलोनी के डुप्लेक्स में रहने वाले 39 वर्षीय ताहिर बंगड़ीवाला अपने परिवार के साथ सोए हुए थे। उस दौरान घर में अचानक आग लग गई। आग के चलते पूरे घर में धुएं के बादल फैल गए, जिससे परिवार को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सांस लेने में दिक्कत होने से घर के सदस्य जाग गए और घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। पूरे घर में धुआं भर जाने से पति पत्नी और 2 बेटे बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें पानीगेट फायर ब्रिगेड के दमकल दस्तों ने कड़ी मशक्कत के साथ सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद परिवार को सही सलामत बचा लिया गया। दुर्घटना के चलते घर में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया है। आज तारीख 13 સપ્ટેમ્બર 2023 સવારે 4:50 વાગે વડોદરા કંટ્રોલ રૂમથી પાણીગેટ ફાયર સ્ટેશનના વોચરૂમમાં જાણકારી મળી કે આજવા રોડ પર બહાર કોલોની મકાન નંબર C206 માં આગ લાગી છે। તુરંત જ વડોદરા ફાયર બ્રિગેડના પાણીગેટ ફાયર સ્ટેશનથી અગ્નિશમન વાહનો સાથે કર્મચારી અધિકારીઓ તાબડતોબ પહોંચી ગયા। ઘટના સ્થળે પર જોયું તો ગ્રાઉન્ડ પ્લસ 1 માળનું બિલ્ડિંગ હતું। એ બિલ્ડિંગમાં 2 બાળકો બાથરૂમમાં ફસાયા હતા અને અવાજો કરતા હતા। એમને તરત જ વડોદરા ફાયર બ્રિગેડના પાણીગેટ ફાયર સ્ટેશનના કર્મચારીઓએ રેસ્ક્યુ કરી લીધા, બચાવી લીધા। ત્યારબાદ જે આગ લાગી હતી ભયંકર, એ આગને કાબૂમાં મેળવી લીધી હતી। જાણવા મળ્યું કે ત્યાંના જે મકાન માલિક છે તાહિરભાઈ, ઉંમર વર્ષ 39, એમના વાઇફ જામિલબેન ઉંમર વર્ષ 33, એ લોકોએ પ્રથમ માળેથી જમ્પ મારીને પ્રથમ બાજુના જે ઘર છે એ શેડ ઉપર જમ્પ મારીને પોતાનો બચાવ કર્યો હતો। गुजरात के भरूच जिले के नेत्रंग से कांग्रेस के युवा नेता द्वारा आदिवासियों के हित और अधिकारों के लिए यात्रा का आयोजन किया गया। आगामी लोकसभा के चुनावों के पहले भरूच लोकसभा बैठक पर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, जहां INDIA इंडिया गठबंधन में टिकट के लिए खींचतान जारी है। लोकसभा चुनाव की तारीख अभी डिक्लेयर भी नहीं हुई है कि उससे पहले भारत जिले के ट्राइबल इलाके में राजनीतिक माहौल जम गया है।
जहां कांग्रेस, भाजपा, आप और बीटीपी सहित के दिग्गज नेता आदिवासी विस्तार में अपना वर्चस्व बनाए रखने की लड़ाई में उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस के युवा नेता शेर खान पठान द्वारा नेत्रंग से आदिवासी समाज के हित और अधिकारों के लिए, समाज के अस्तित्व की लड़ाई के संघर्ष के लिए विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के भाग रूप यात्रा निकाली गई। यात्रा नेत्रंग से प्रारंभ कर राजपारडी, झगड़िया, वालिया, अंकलेश्वर होती हुई कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची, जहां आदिवासियों के हितों की मांग करते हुए आवेदन पत्र सौंपा गया। इस मौके पर संदीप मांगरोल, यूथ कांग्रेस प्रमुख शकील नरपत वसावा मौजूद रहे। आदिवासी जल जंगल जमीनना પહેલા માલિક છે। આ સરકાર આજ અમારા હકો ઉપર તરફ મારી રહી છે કે આદિવાસીનો આની ઉપર જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને આ અધિકારને યાદ અપાવવા માટે આજે અમે 13મી સપ્ટેમ્બરે અધિકાર દિવસ યાત્રા કાઢી છે। જે આદિવાસીઓ સાથે થતા અત્યાચાર અને અન્યાયને લઈને આજે નેત્રંગથી એક રેલીનું આયોજન કરેલું છે। નેત્રંગથી કલેક્ટર કચેરી સુધી એક રેલી કરવાના છે। એની અંદર અમારા આદિવાસી સમાજની માંગણીઓ છે કે જે જંગલની જમીનો, ઝઘડિયા જીઆઈડીસીની અંદર જે કામદારોને કાયમી રોજગારી નથી મળતી, સ્થાનિકોને રોજગારી નથી મળતી, સરકારી કચેરીઓની અંદર જે અહીંયા જેટલી તાલુકા પંચાયત હોય, મામલતદાર ઓફિસ, પોલીસ સ્ટેશનની અંદર આદિવાસીઓ સાથે અન્યાય થાય છે, કોઈ પણ જાતનું કામ કરવામાં આવતું નથી। અને જે અંકલેશ્વર અને ભરૂચની અંદર આદિવાસી સમાજની જે ઝૂંપડપટ્ટી આવેલી છે એ ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર એ લોકોને કાયમી આવાસ મળે અને જગ્યા ફાળવવામાં આવે એવા ઘણા બધા મુદ્દાને લઈને આજે એક સમાજ દ્વારા એક આદિવાસી રેલીનું આયોજન કરેલું છે। आज विश्व आदिवासी अधिकार दिवस है। इस मौके पर आदिवासियों के मसीहा माने जाते छोटू वसावा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जोहार शब्दने साकर करवा माटे आदिवासी लोकोए અને જે કોમ્યુનિટીને અન્યાય થાય છે એવા લોકોએ પોતાના ગામની અંદર ગામ સભાઓનું ગઠન કરીને પોતાની જે કથની છે, ગામની જે સમસ્યાઓ છે એને ઉજાગર કરતા તમે જ્યાં સુધી બોર્ડ નહીં મારશો ત્યાં સુધી આવા જે નકલી લોકો આપણા પર રાજ કરતા રહેશે અને આપણને ગેરસમજ પેદા કરીને આપણી વચ્ચે વૈમનસ્ય ઊભું કરીને હંમેશા આપણી મિલકતો, આપણું જે આરોગ્ય છે, સ્વાસ્થ્ય, આપણી જમીનો છે, આપણે જેના પર આધાર રાખીને જીવીએ છીએ એ બધું છીનવતા રહેશે। એ સંદેશો હું આપ બધાને આપું છું। તમે લડત નહીં લડશો ત્યાં સુધી આ લોકો આવતા રહેશે। અનેક વખતે આ દેશ પર ચડાઈ કરી છે અને એવા લોકો આખી સંપત્તિ લૂંટીને ગયા છે। ભારતના કિસાનોની વાત કરવી જોઈએ, પર્યાવરણની વાત કરવી જોઈએ, એ કોઈ વાત કરી નથી અને એને તો હડપ કરી લેવું છે। આ લોકોને લાવીને આ બધું કરવું છે। આ દેશને લૂંટવા માટે આ એક સાજિશ છે। એ બધી પાર્ટીઓ લગભગ એક જ વેલાના તોમડા જેવી છે। હું વર્ષોથી કહું છું ને આ ચૂંટણીમાં, ગઈ ચૂંટણીમાં સાબિત થયું છે કે કોંગ્રેસ બી નિષ્ક્રિય રહી છે અને આપે તો ભાગ એવો ભજવ્યો છે કે વોટ તોડીને ભાજપને જ જીતાડી છે પૈસા લઈને। એટલે એવા લોકોથી બી ચેતતા રહેવાની જરૂર છે। કેટલી પેઢીઓ આ લોકોએ ખતમ કરી છે અને કેટલી પેઢીઓ ખતમ કરી નાખશે। એટલે ભાઈઓ તમે સમજો આ વાતને અને આ સમાજ તમારો છે, આપણો છે અને એને સાચવો। આ દેશ આપણો છે। देश की सेवा में जान गंवाने वाले शहीद वीर महिपाल सिंह वाड़ा के परिजनों को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों 1 करोड़ रुपयों का चेक अर्पण किया गया। गुजरात सरकार ने शहीद महिपाल सिंह वाला के परिवार को 1 करोड़ का चेक दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद स्थित उनके आवास पर जाकर परिजनों को चेक प्रदान किया। महिपाल सिंह के परिवार को केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और सेना की ओर से 2 करोड़ 75 लाख की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री गुजरात राहत कोष से शहीद की पत्नी को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इसके अलावा शहीद जवान के बच्चे को 25 साल का होने और अपनी शैक्षणिक पढ़ाई पूरी करने तक 5,000 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा पत्नी और मां दोनों को 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। आमतौर पर सेना में हर जवान 19 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है, जबकि वीर महिपाल सिंह
7 साल की सेवा के बाद शहीद हो गए। उनके परिवार को केंद्र सरकार और सेना द्वारा अगले 12 वर्षों तक उनके वेतन और इजाफा सहित सभी लाभ दिए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार से 35 लाख, जम्मू कश्मीर सरकार से 25 लाख, डीएसपी खाता धारक के रूप में एसबीआई से 50 लाख, एजीआई बीमा कवर से 40 लाख, विशेष पारिवारिक पेंशन के तहत 40,000 प्रति माह, सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण 8 लाख और फंड से अन्य सहायता के तौर पर करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपए मिलेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अमने जे चेक अर्पण करवाना था सहाय पेटे, केंद्र सरकार सहाय पेटे, जे चेक आज अर्पण करी अमने सहानुभूति पाठवी है। गुजरात सरकार અને જે સરકારી અધિકારીઓ અત્યારે આ કન્ડિશનમાં અમને સારી મદદ કરી છે। દિલ્હીની અથવા તો એમની મિલિટરીની પણ જે પણ કંઈ આવે એ અલગથી થશે, પણ અત્યારે તો ગુજરાત સરકારે તાત્કાલિક સહાયથી 1 કરોડ રૂપિયાનો ચેક એમને અર્પણ કર્યો છે, એટલે અમે કાળિયા રાજપૂત સમાજ તરફથી ગુજરાત સરકારનો આભાર માનીએ। ગુજરાત માજી સૈનિક સંગઠન દ્વારા સરકારશ્રીને ઘણી બધી રજૂઆત કરી અને આ સહાય માટે અમારે આંદોલન પણ કરવું પડ્યું અને આંદોલનના અંતે અત્યારે 1 કરોડ સહાય હાલ જે પ્રથમ વીર શહીદ જે છે મહિપાલસિંહ વાળા એમને આજે મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તકે એમને આર્થિક સહાય અર્પણ કરવામાં આવી છે। અમે સરકારશ્રીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે સરકારશ્રીએ અમારી વાત સાંભળી અને આજે ગુજરાતના જે પણ શહીદ થઈ જાય અને 1 લાખથી 1 કરોડ સહાય વધારી અને કરી આપવામાં આવી છે। પર મંથ જે પેન્શન ગુજરાત સરકાર તરફથી આપવામાં આવે છે એમાં વધારો કરી આપવામાં આવ્યો છે। સરકારશ્રીને અમે એક મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ કે હજુ પણ જે ઓન સર્વિસ જે છે એ શહીદ સિવાયમાં બેટલ કેજ્યુઅલ્ટી સિવાયમાં જે શહીદ થઈ જાય છે, અમે એને શહીદ કહીએ છીએ, જે અવસાન થઈ જાય છે, એમને પણ કંઈ ને કંઈ રાશि આપવી જોઈએ એવી અમારી સરકારશ્રી પાસે માંગ છે। गुजरात के नर्मदा की राजपीपला नगर पालिका में अध्यक्ष की सीट बदल दिए जाने का आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाया है। गुजरात की पालिकाओं में इन दिनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन की कार्यवाही चल रही है। नर्मदा जिले की राजपीपला पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष का विरोध सामने आया है। दरअसल रोस्टर के अध्यक्ष की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन शासक पक्ष के पास योग्य उम्मीदवार नहीं होने की वजह से सीट बदलकर जनरल महिला कैटेगरी की कार्रवाई होने का आरोप विरोध पक्ष ने लगाया है। विपक्ष के नेताओं ने आरोप के साथ नगरपालिका के सभाखंड से सामूहिक रूप से वॉकआउट कर दिया। उनके साथ निर्दलीय सदस्य भी जुड़े। इस मामले पालिका की विपक्ष नेता शहीनूर पठान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रमुख અને ઉપપ્રમુખ ચૂંટણી કરવામાં આવી, જેમાં ગત વર્ષ મુજબ 5મું રોસ્ટર પ્રમાણે એસસી નું રોસ્ટર હતું અને એસસી ની સીટ હતી। આ લોકોએ બદલીને અનામત રાખેલું છે અને સ્ત્રી સીટ હતી। આ લોકોની અંદર કોઈ બી એસસી મહિલા છે નહીં કે જેન્ટ્સ છે નહીં, તેના લીધે આ લોકોએ બદલેલ છે રોસ્ટરને, તેનો અમે વિરોધ કરીને વોકઆઉટ કરી રહ્યા છીએ। गुजरात के राजपीपला में भी आगामी 2.5 वर्ष के लिए मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव कर लिया गया है। राजपीपला की नगर पालिका में आज चुनाव अधिकारी शैलेश गोकलाणी की अध्यक्षता में चुनाव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। वहीं चुनाव में अपक्ष के 3 सदस्य गैर मौजूद रहे। आगामी 2.5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मेयर के पद पर धर्मिष्ठा पटेल और डिप्टी मेयर के तौर पर गिरिराज सिंह खेर के नामों का ऐलान किया गया, जिसके चलते उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। दोनों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। રાજપીપળા નગરપાલિકાની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની આજરોજ ચૂંટણી કરવામાં આવી। પ્રમુખ તરીકે ધર્મિષ્ઠાબેન કમલેશભાઈ પટેલને ચૂંટાયેલા જાહેર કરવામાં આવેલા છે અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ગિરિરાજસિંહ મહેન્દ્રસિંહ ખેરને બિનહરીફ ચૂંટાયેલા જાહેર કરવામાં આવેલા છે। ધર્મિષ્ઠાબેનની સામે કોણે ફોર્મ ભરેલું? વિરોધ પક્ષમાંથી કે પાર્ટી? ધર્મિષ્ઠાબેન કમલેશભાઈ પટેલની સામે ઉષાબેન જગદીશભાઈ કહારે ફોર્મ ભરેલું હતું, પરંતુ મતદાનના સમયે ઘણા સભ્યો વોકઆઉટ થતા તેમના તરફે કોઈ મત મળેલ નહોતા। સાહેબ, વોકઆઉટનું કારણ શું? વોકઆઉટમાં તે લોકોએ રોસ્ટર સામે વાંધો ન લાવેલો। સરકારશ્રી શહેરી વિભાગ દ્વારા રોસ્ટરની જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે અને કલેક્ટરશ્રીના જે હુકમ અથવા નોટિસથી તે લોકોને જાણ કરવામાં આવેલી હતી કે આજે આ ચૂંટણી છે, તેમાં એ રોસ્ટરનો ક્રમાંક નંબર સાથે સામાન્ય સ્ત્રી માટેનું આ વોટિંગ છે પ્રમુખ તરીકેનું, તે પણ જણાવવામાં આવેલું હતું, જેથી તેમનો વાંધો ખારિજ કરવામાં આવેલ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીને પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, મારી પસંદગી જે કરવામાં આવી છે
અને મારી નગરપાલિકાની ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, મને જે સાથ સહકાર આપ્યો એ બદલ. રાજપીપળામાં બાકી હશે તે રોડ રસ્તા બધા પહોળા કરવાના હશે, કોઈ બી કંઈ વધારાનું હશે કામ તે કરી શકું. સૌ પહેલાં તો હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ સંગઠનશ્રીઓનો, જિલ્લા પ્રમુખ, મહામંત્રીશ્રી તેમજ ચૂંટાયેલા મારે સાથી સદસ્યશ્રીઓ તેમજ તમામનો જે સાથ સહકાર મળ્યો એ સભાને મારી પર જે વિશ્વાસ રાખીને મને જેવું પ્રમુખની ચૂંટણીમાં મારી તરફે વોટિંગ કરવા જે વ્હીપ આપ્યો તે બદલ હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. વિકાસના કામો તો લગભગ આપણે 2.5 વર્ષમાં જે પણ આગળનું શાસન હતું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન તેમાં આપણે તમામ પૂર્ણ કર્યા છે. હજુ પણ જે કોઈ વિકાસના કાર્યો કોઈ પણ બાકી હશે તે અમે પૂર્ણ કરવા તમામ प्रयास કરીશું. गुजरात के सिद्धपुर तालुका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। वहीं जिला पंचायत के इतिहास में सबसे छोटी उम्र के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। सिद्धपुर तालुका पंचायत में पिछले 2.5 साल कांग्रेस का शासन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल की टर्म के लिए कांग्रेस के 2 सदस्यों से क्रॉस वोटिंग करवाकर भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन दिलवाया है। और ऐसे में सिद्धपुर तालुका पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष गिरिबेन ठाकुर और उपाध्यक्ष जगदीश पटेल के नाम पर मोहर लगाई गई है। माननीय मंत्री श्री आ विस्तारमा प्रतिनिधि कर्યું એમના કામો વિકાસના અને માનનીય કેન્દ્રમાં સરકાર છે, નરેન્દ્ર મોદી સરકાર છે, મોદી સાહેબની એ સરકારના દેશના હિતમાં રાજભાવનાથી જે કામો થઈ રહ્યા છે વિકાસના અને દેશને આંતરરાષ્ટ્રીય જે નામના મેળવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યા મોદી સાહેબ કરી રહ્યા છે એ ભાવનાઓથી પ્રેરાઈને માનનીય મંત્રીશ્રીના અહીંયા લોકલ પાર્ટીના આગેવાનના કામોના સહકાર, માન્ય મંત્રીશ્રીના સહકારીઓના સહકાર અને સંભાવનાના કારણે આ જે કંઈ કોંગ્રેસના ડેડિકેટો હતા એ ભાજપ તરફ આકર્ષાયા અને એમને એવું લાગ્યું કે આ તાલુકાના વિકાસ માટે તાલુકા પંચાયત ભાજપની જરૂર છે અને ભાજપની બનશે તો માનનીય મંત્રીશ્રીને ગુજરાત સરકારને કામ કરવાની ખૂબ સારી તક મળશે. પાણીની સમસ્યાઓ, કોઈ આ રોડ રસ્તા, પછી આરોગ્ય, પછી જીઆઈડીસી, એક ઘણા નવા કામો મંજૂર થાય. वहीं पाटन की सांतलपुर तालुका पंचायत में 9 सदस्यों ने भाजपा से बगावत की थी। ऐसे में उन सदस्यों को पाटन जिला भाजपा ने सस्पेंड कर दिया है। सांतलपुर पंचायत भाजपा के पास से कांग्रेस ने हत्या ली है। हारिज तालुका पंचायत में भी भाजपा के एक सदस्य ने बगावत की, जिससे भाजपा की सीट कांग्रेस के पास चली गई है। पाटन जिला भाजपा द्वारा तत्काल असर से 10 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया है। આજ રોજ જે તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ એમાં હારીજ તાલુકા પંચાયતની અંદર જે સદસ્યએ પાર્ટીના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું છે અને જેને કોંગ્રેસમાં કામ કર્યું છે, જે મતદાન આપ્યું છે, એને આજે પાર્ટીમાંથી હેતલબેન ઉદાજી ઠાકોરને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય સાંતલપુર તાલુકાના 9 કાર્યકર્તા, 12માંથી 9 કાર્યકર્તાએ જે પાર્ટી વિરુદ્ધના મેન્ડેટનો અનાદર કરી અને જેને મતદાન કર્યું છે એને પણ 9 જણને આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશની સૂચનાથી, મોવડી મંડળની સૂચનાથી એમને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે અને તેઓને પણ પાર્ટીની અંદરથી प्राथमिक सभ्य पद रद्द કરવામાં आज थी। पाटन जिला पंचायत में अध्यक्ष के रूप में भानुमति मकवाणा और उपाध्यक्ष के रूप में साकाजी ठाकुर को 2.5 साल तक जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा का मैंडेट जिला पंचायत के इतिहास में सबसे छोटी उम्र की ग्रेजुएट हेतल ठाकुर और उपाध्यक्ष गोविंद मालधारी को दिया गया है। भाजपा के पास बहुमत होने से भाजपा उम्मीदवार की जीत होने पर यहाँ केसरिया लहराया है। पहला तो हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मोवडी मंडल तथा जिला भाजप संगठनना पदाधिकारी तथा मारा जिला पंचायत तमाम सदस्यों श्रीओनो तेमने मने जिला आटली नानी उमरमां मने जिला पंचायत प्रमुख बनवानी तक आपी ते बधा दिलथी हूँ बधाईनो खूब खूब आभार मानु छुं। गुजरात के वडोदरा में विभिन्न मंडलों द्वारा गणपति जी के आगमन यात्रा का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी को अब चंद दिन ही बाकी रहे हैं, जिसके चलते वडोदरा शहर में विभिन्न मंडलों द्वारा गणेश जी के आगमन यात्रा निकाली जा रही है। मनमोहन युवक मंडल द्वारा बड़ी धूमधाम से निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त जुड़े थे। राजमार्गों पर निकली ये आगमन यात्रा वागुड़िया डी मार्ट से शुरू हुई, यमुना मिल रोड, प्रतापनगर, बड़ौदा डेयरी सर्कल, तुलसीधाम चौकड़ी, मांजलपुर नाका होती हुई मंडल पर पहुंची थी। यात्रा के दौरान तुलसीधाम 4 रास्ता पर भव्य आतिशबाजी की गई।
इस मौके पर भाजपा के कॉरपोरेटर शैलेश पाटिल और कांग्रेस के पूर्व काउंसलर चिराग झवेरी उपस्थित रहे। અમારું મનમોહન યુવક મંડળ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વડોદરાના મહારાજા તરીકે છેલ્લા 35 વર્ષથી ગણેશજીની સ્થાપના કરી રહ્યું છે। આ વખતે ભરત કહાર ડીમાર્ટની સામેથી ગણેશજીની શોભાયાત્રા નીકળી રહેલી છે। વિશાળકાય સ્વરૂપમાં ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત હિંચકા પર આ સ્થાપના થવા જઈ રહેલી છે। વડોદરાવાસીઓને અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ કે આ દર્શનનો લાવો લેવાનું ચૂકતા નહીં। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।